Hello everyone, just a second. Okay. Chalo students, welcome to test book. This is Ashish. I welcome all of you to CAT preparation by test book, fourth session of mensuration and the last session of mensuration. आज के session में we are going to cover some very good questions for mensuration CAT level obviously. So without wasting much of your time, let's start today's session. लेकिन एक आपको there is a very important notification. There is a very important update. Guys, scratch batch में we have covered the entire arithmetic in detail. थियरी भी करा है, इनफ क्वेश्चंस भी करे हैं, बट काफी टाइम हो गया उसको, राइट? This Sunday I'm bringing a mini marathon, 22nd of June, Sunday 7 p.m. Sunday I have taken Sunday because Sunday को आप सब फ्री रहते हैं. So 22nd June 7 p.m. I am conducting arithmetic का mini marathon. 2-2.5 घंटे की क्लास होगी. And the questions that we will be taking care of would be from all the sections of arithmetic के सारे topics से almost. And the questions would be at par with CAT level. ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड चांस कि आप लोग समझो कि आपका प्रिपरेशन कहां पर स्टैंड कर रहा है अभी. इवन इफ यू सॉल्व 60-70% ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी विल बी डीलिंग इन दैट सेशन means you are on the right track for CAT 2025. Chalo, note the time. It's 22nd June 7 p.m. on this channel. This is completely free of cost. Let's start with the first question of the day. First question of the day, guys. चलो, I'll give you standard 90 seconds to attempt. एक बार आप 90 सेकंड में ट्राई करके देखो, and then we will discuss this question. I totally agree. 90 seconds में it's very difficult to get to the answer of this question, but I expect कि आप लोग at least question read out करो, try to understand what data is given, what we can churn out of it. Come on, guys. Very good. Come on, guys. Try answering the question. You got last 10 seconds left. Okay, देखो. Now in this question what do we have? एक स्फेयर के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है. द टाइम सब केस इसको पहले हटा दिया जाए. एक स्फेयर के अंदर देयर इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. विजुअलाइज करो द थिंग्स. स्फेयर के अंदर यू हैव अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. रेक्टेंगुलर बॉक्स है मींस व्हाट? रेक्टेंगुलर बॉक्स का पैरामीटर क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है. Okay, it's not a rectangle but a rectangular box. Just चलो, ये बड़ा हुआ स्फेयर है. दिस अ बिग स्फेयर. उसके अंदर यू हैव दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स. और ये मैंने 2D में बनाया है. यू हैव टू विजुअलाइज दैट दिस इज इन 3D. ओके, आपको विजुअलाइज करना है कि ये है 3D में. आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम इन 2D.
तो कहीं ना कहीं इस सर्कल स्फेयर का, दिस इज अ स्फेयर, इसका जो डायमीटर होगा वुड बी व्हाट, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। बॉडी डायगोनल ऑफ जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, राइट, बॉडी डायगोनल आई एम टॉकिंग अबाउट। सपोज एक ये रेक्टेंगल है, सपोज दिस इज द रेक्टेंगल, इसका बॉडी डायगोनल कहां पे है? इसका बॉडी डायगोनल क्या है सर? बॉडी डायगोनल फॉर दिस रेक्टेंगल इज, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द बॉडी डायगोनल। आपके रूम में विजुअलाइज करो, एक कॉर्नर से बॉडी डायगोनल ऑपोजिट कॉर्नर, दैट इज बॉडी डायगोनल। The body diagonal of the rectangular box would be the diameter of the sphere, right? Right? तो मुझे कहीं ना कहीं ये बॉडी डायगोनल निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का। एंड व्हाट इज द बॉडी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स? सर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ L square plus B square plus H square, and this would become the diameter. This would become the diameter of the sphere, right? So चलो, अब हमारा टारगेट क्या है? Body diagonal of the rectangular box. We will forget about the sphere for the time being. That body diagonal would be the diameter of the sphere, right? Come on. Now what is given? What is given here? आपको given क्या है? आपको given है 846 square centimeter. What is this? The surface area. What is the total surface area of a rectangular box? So that is 2 times LB plus, 2 times LB plus BH plus LH. This is nothing but 846. ये given है आपको, 2 times LB plus BH plus LH. This is 846. So LB plus BH plus LH is 423, right? Let this be one of the equations. Let this be one of the equations. अब एक दूसरा इक्वेशन भी गिवन है आपको. The sum of the lengths of all its edges is 144 centimeter. How many edges are there in a rectangular box? How many edges are there in a rectangular box? Sir, 12 edges are there. 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है एंड 4 हाइट है. दिस इज 144 सेंटीमीटर, ये गिवन है. द सम ऑफ ऑल द एजेस इज 144. ओके, सो 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है. दिस इज 144. सो आई कैन से L plus B plus H is 144 by 4. How much is this? 36, is it? Yes sir, this is 36. ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन. When you observe them closely, अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? सर मुझे ये दोनों इक्वेशन मिले. तो अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? अलजेब्रा की एक्सप्रेशन लगाते हैं, राइट? अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दें, L plus B plus H is equal to 36 है. If I square it on both of the sides, this is A plus B plus C whole square. And what is A plus B plus C whole square? That's A square plus B square plus C square plus 2 times LB plus BH plus LH equals 36 square is how much? 1296. Sorted. और कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी. इसकी वैल्यू है मेरे पास 423. सो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 423 846 एंड L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज 450. राइट? आपको चाहिए था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर एंड दैट इज 450 हियर. सॉर्टेड?
there is some technical glitch going on. Now I can find out the diameter of the sphere. Diameter of the sphere is square root of these, square root of 450. What is the square root of 450? This is 225 into 2. So that's 15 root 2. That's the diameter. आपको क्या मिल गया? Diameter. आपको क्या बताना है? Volume of the sphere. Volume के लिए you need radius. What would be radius? 15 root 2 by 2. Yes or no? Yes, sir. So I'm taking this out. I need some space. Now, what is radius of the sphere? Radius of the sphere is 15 root 2 by 2. उसका आधा कर दिया. And what is volume? Volume पूछा था. So that's 4 by 3 into pi. Let's keep pi as it is क्योंकि answer में you have pi into r cube 15 root 2 cube 15 by 2 into 15 by 2 into 15 by 2 into 2 root 2. Sorted? Chalo. This goes in 5 times. 15 15s are 225. 225 into 5 times is 1125. 1125 pi. 1125 root 2 pi. That's your answer. 1125 root 2 pi. That's your answer. Very good. So correct answer to this question was option B. इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. I'll give you 90 seconds. कर लो इसको ट्राई. Come on बेटा. Hello Anuj Kundu. One of my friend was Sanjay Kundu. Come on, try this one. Come on, beta. Last 30 seconds left. Time's almost up. Chala. The area of a regular hexagon is equal to area of a triangle of side 12. Hexagon का area क्या होता है? What is the area of a hexagon, beta? Let's say hexagon का side is A. So area, we know that the area is 3 this is the area of the hexagon. Bolo yes sir. Is everything okay? Let me refresh for add. No, not add. Okay. Clear? Chalo. Area of the hexagon with side is 3 root 3 by 2 a square. ये हो गया area of the hexagon. And for an equilateral triangle. Equilateral triangle. What is the area of an equilateral triangle? So root 3 by 4 into side square.
साइड गिवन है ना, सो √3/4 इंटू साइड इज 12, तो 12 स्क्वायर। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोथ ऑफ दीज एरियाज आर इक्वल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ हेक्सागन एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी थी। जस्ट इक्वेट देम। नाउ 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स √3/4 इंटू 144। जस्ट इक्वेट देम। √3 से √3 गया, दिस गोज इन हाउ मेनी टाइम्स, 36, ठीक है, दिस गोज इन 12 टाइम्स, राइट। ए स्क्वायर इज 24. What would be the value of a? Value of a is square root of 24, and this is 2√6. 2√6 √24 is 2√6. आपको निकालना था side of the hexagon, which is a, and a is 2√6. Option D was the right answer. चलो guys, if you are targeting CAT 2025 ना, this is high time. अब आपके पास technically time बचा नहीं है CAT 2025 के लिए. If you are still wondering here and there, do subscribe. अभी एक तगड़ा सेल भी चल रहा है, योगा डे सेल. Get benefited from it. योगा डे सेल में you get MBA Pro subscription only at 14,999, right? You get only at 14,999, but you have to apply the code Core MBA. Also, there is a batch upcoming in July, Achieve batch. Be benefited from it. उसमें आपको सारे सेशंस लाइव मिलेंगे, from scratch till whatever you need to crack the examination with flying colors. Okay. Not only that, इस संडे को we are conducting AIMT. Be a part of it. AIMT तो बहुत इंपॉर्टेंट है. AIMT अटेम्प्ट करना तो टेक्निकली इंपॉर्टेंट है. आपको कैट लेवल मॉक मिलता है फ्री में अटेम्प्ट करने के लिए. आपको पता चलता है वेयर डू यू स्टैंड इन द कंपटीशन. वीडियो एनालिसिस नेक्स्ट डे मिल जाता है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा. डू अटेम्प्ट AIMT फॉर श्योर. ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. You got 90 seconds for this. Yes, Anuj, you were right. Come on, bacha. Oh, time's almost up. Time's up, beta. Chalo. Anybody with the answer? D option, sir. नहीं, वो तो लास्ट क्वेश्चन के लिए था ना. On a rectangular metal sheet of area 135 square inches, a circle is painted such that the circle touches two opposite sides. Okay, very good. Chalo, let's draw a rectangle. Let's draw a rectangle. Okay. And a circle is drawn such that it touches two opposite sides. Definitely circle ऐसा कुछ होगा.
ओके, वेरी गुड। क्या गिवन है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 135. A circle is painted such that the circle touches two opposite sides. Done. If the area of the sheet left unpainted is 2/3 of the painted area. पेंटेड एरिया क्या है? ये सर्कुलर एरिया पेंटेड है। पेंटेड एरिया क्या है? कुछ तो टेक्निकल ग्लिच है यार। ये पेंटेड एरिया क्या है? दिस सर्कुलर एरिया इज पेंटेड, दिस एरिया इज पेंटेड, राइट? दिस एरिया इज पेंटेड and this is 2/3, sorry, and this outside area is unpainted area. So this unpainted area is 2/3 of this painted area. Let's say the painted area is 3x. Let's say total जो area painted है is 3x. तो जो unpainted area है, मतलब this and this, ये कितना है total? This is 2/3 of the painted area. So that is 2x. इन दोनों का सम क्या है? 2x. एंड लकीली आपको टोटल एरिया गिवन है 135. व्हाट इज टोटल एरिया? व्हाट इज टोटल एरिया? टोटल एरिया इज नथिंग बट पेंटेड एरिया प्लस अनपेंटेड एरिया, राइट? अनपेंटेड एरिया. ओके, नाउ पेंटेड एरिया को 3x लिया है, वी हैव टेकन इट टू बी 3x. Unpainted area is 2x and total area is given to be 135, gives me x as 27, and कहीं ना कहीं 3x would be 81. x is 27, तो 3x is 81. Sorted. आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल गया बेटा, and this area is remaining is 54. This is 54. अभी देखो एरिया ऑफ सर्कल मिल गया, तो उससे क्या मिलता है आपको? रेडियस मिल जाएगा, राइट? एंड यू कैन कैलकुलेट डायमीटर, एंड डायमीटर इज नथिंग बट दिस ब्रेथ. द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, आई कैन से फॉर सर्कल पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स 81. बोलो यस सर. आंसर में वी कैन सी दैट आंसर में पाई है ऑलरेडी, सो लेट्स कीप पाई एज इट इज. पाई को टच नहीं करते हैं, सो आई कैन से आर स्क्वायर इज 81 अपॉन पाई एंड आर इज 9 अपॉन रूट पाई. नाउ रेडियस ऑफ दिस सर्कल वुड बी 9 upon root pi. This radius is 9 upon root pi. So this radius is also 9 upon root pi. The entire length is 18 upon root pi. So this breadth is 18 upon root pi. Hayana? Yes sir. Sorted. I hope यहाँ तक आपको समझा. I'm taking this out क्योंकि I need some space. You can always go back, आप स्लाइडर को पीछे करके you can watch what we have discussed. I have breadth मुझे मिल गया. Length, I don't know what is length, but I know the area of the rectangle. I can write length into breadth is 135. I know the entire area of the rectangle, and also I have the length, breadth. I can put the value of breadth 18 by root pi equals 135, and then I can calculate length. है ना? कर सकते हैं ना? करो ना सर, आ जाओ. Let's do it. 9 से this goes in 2 times, this goes in 15 times. So length is 15 root pi upon 2. Breadth मिल गया आपको. Breadth was 18 upon root pi. आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेड्थ है. You need to answer what is the perimeter. You have the length, you have the breadth. You need to answer what is the perimeter of the rectangle. What is the perimeter of the rectangle, by the way? सर ये तो आसान है सर, ये तो हम कर लेंगे सर.
तुम हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा टेंशन दिया तो यू कैन सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन। चलो, नाउ द perimeter is 2 times length plus breadth. Length is 15 root pi upon 2 plus breadth is 18 upon root pi. This is your breadth. अभी आंसर किसी और फॉर्म में है, आंसर के फॉर्म में लाते हैं चीजें। ओके, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट यू विल गेट 15 रूट पाई प्लस 36 अपॉन रूट पाई। हाँ, अच्छा देखो, अगर हमने रूट पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो और इन न्यूमरेटर आई विल हैव रूट पाई एंड डिनोमिनेटर आई विल हैव पाई। हाँ या ना? यस सर। अब यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा? कॉमन क्या ले सकते हैं? एक तो रूट पाई कॉमन ले सकते हैं। 15 और 36 का HCF होता है 3, तो कहीं ना कहीं 3 रूट पाई कॉमन लिया जा सकता है इसमें से। यस सर। एंड व्हेन यू टेक 3 रूट पाई एज कॉमन, इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 12 अपॉन पाई, एंड दिस इज ऑप्शन सी। दिस इज ऑप्शन सी। Option C. So correct answer to this question was 3 root pi bracket में 5 plus 12 upon pi. Okay, very good question this was. I hope आपको clear हुआ. Let's move to the next question without wasting much of your time. Very good. Try this question. I'll give you handsome 90 seconds. Come on, beta. Acha, do like the session. You are here learning something. Do like the session. Come on, बच्चा. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से द कंसेप्ट दैट इज मोस्ट आस्क्ड इज दिस वन, जो आपके सामने बोर्ड पे है। मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेंसुरेशन इन कैट एग्जामिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। अटेम्प्ट करो। Last 10 seconds. A solid right circular cone. बाबा, चलो अगेन आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर आपके सामने एक कोन है तो कोन का फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा बेटा? द फ्रंट व्यू ऑफ द कोन वुड बी समथिंग लाइक दिस। लेट्स से ये कोन का आपका फ्रंट व्यू है। ओके, फ्रंट व्यू, दिस इज बाउंड टू बी a 3D फिगर, बट फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट व्यू इज समथिंग लाइक दिस। ओके, अच्छा, हाइट ऑफ दिस कोन इज गिवन टू बी 27। इसका हाइट दे हैव सेड दैट इट इज 27 सर। Height is 27. So this height is 27. This height is 27. Now it is cut into 2 pieces. इसको 2 pieces में काट दिया, cut into 2 pieces बेरहमी से, along a plane parallel to its base. मतलब बेस के पैरेलल से इसको कट कर दिया इन 2 pieces. कहां से? At a height 18 centimeter from the base. Okay, so what they did is
they did split into two halves. इधर से कट कर दिया. Okay, and this height was, ये जो height है ना, this was 27 meter from 27 centimeter from the base. No, 18 centimeter from the base. So this is 18. Base से 18 centimeter. So what would be this length? This length would be 9. Okay. अब ये दो पीसेस में कट गया. इस पीस को ना, इस वाले पीस को नाम देते हैं A और इस वाले पीस को नाम दे देते हैं B. ओके. और इस पूरे डायग्राम को ओरिजिनल. अच्छा, what would be the ratio? What would be the ratio of volume of piece A and volume of original cone? क्योंकि A भी एक कोन है. देखो बेटा, ये जो A है, this is also a cone. Yes or no? कोन ही है ना, और पहले भी एक कोन था. सो इस A का और ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? What would be the ratio? So volume of A is 1/3 pi r square into h. ओके, है ना? बोलो यस सर. या फिर देखो क्या होता है ना, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं. इनका जो वॉल्यूम होता है ना, दैट इज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर हाइट. हाइट के क्यूब के प्रोपोर्शन में होता है. ओके, एच ए, अब डिराइव करने का टाइम नहीं है. हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ ओ इसके क्यूब के प्रोपोर्शन में होता है. बोर्ड भी पूरा भर जाता. सो नोट दिस डाउन. वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओ is in the ratio of their height का cube, right? We know their heights. So volume of A upon volume of original cone is, height of A क्या है बेटा? Height of A is 9. Total height क्या है? 27. इसका cube. So 1/3 cube. Okay, so that's the thing. But volume of A, ये इधर लिखते हैं. This is 1/27. Sorted. So if I say V original अगर 27x था तो VA कितना है बेटा? x. वॉल्यूम ऑफ A और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन इज इन द रेशियो 1:27. तो अगर V ओरिजिनल 27x था तो VA कितना है? x. तो वॉल्यूम ऑफ B कितना होगा? व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ B? Total is 27x. This is x. So volume of B would be 26x. This is x. Total is 27x. So volume of B would be 26x. Right? And question में given है difference between the volume of the two pieces is 225. इन दोनों pieces के volume का difference is 225. What is the difference between the volume? 26x minus x, 25x. 25x is the difference between the volume of these two pieces, bottom piece and top piece. Sorted? So 26x और x का difference है 25x and this is 225. This is 225. So what is the value of x? X की value है 9. X is 9. And what was asked? Volume of original cone. What is volume of original cone? Sir, volume of original cone is 27x, where x is equal to 9. Volume of original cone is 27x, where x is equal to 9. So 27 into 9 is 243 cc. This is your answer. 243 cc. सो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको जो याद रखना है, दैट विल हेल्प यू, इज दिस वन. इसको नोट कर लो कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन कैट फ्रॉम मेंसुरेशन. ओके बेटा, चलो लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइक क्वेश्चन.
Try this one. I'll give you 90 seconds for this as well. Try this. Chalo, take a moment to like the video, beta. There is some technical fault today, but it's not that major कि क्लास ना हो. क्लास तो होगी, कक्षा तो चलेगी. चलो टाइम्स अप इस वाले क्वेश्चन के लिए भी. आ जाओ. A right circular cone of height 12 feet stands on its base and the diameter is 8 feet. Okay. Quickly करते हैं इसको. So cone कुछ ऐसा दिखेगा. Okay. The height of this is 12 feet and diameter is 8. Height is 12. Diameter is 8. So this is 4 and this is 4. Okay, and height is 12. Height is 12 feet. Height is 12 feet. The tip of the cone is cut off with a plane which is parallel to the base. Like last question जैसा है. The tip of the cone is cut off with a plane which is parallel to the base and 9 feet from the base. Base से 9 feet ऊपर ऐसा कट कर दिया parallel to the base. So this is 9. So this would be 3 because the height was 12. Again इसको करो. इसको piece A बोल देते हैं. इसको piece B बोल देते हैं. Piece B मतलब this is piece B and the entire is original. Okay. Same concept use होगा. What is asked with pi is equal to 22/7. The volume of the remaining part of the cone, मतलब volume of B is asked. What is asked? Volume of B is asked. Sorted. Let's apply the same concept. Right? I can say volume of A upon volume original is in the ratio of cube of their heights. Height of A upon height of original. What is height of A? सर A का हाइट तो 3 है, पूरे ओरिजिनल कोन का हाइट तो 12 है, तो 3/12 क्यूब. So this is 1/64. Sorted. So volume of A and volume of original is in the ratio 1/64. So if I say the total volume original is 64x, तो volume of A क्या हो जाएगा बेटा? X. Yes or no? Because they are in the ratio 1:64. If I say that the total is 64x, तो ये हो जाएगा x and volume of B would be 63x and you have to find the value of 63x. Ultimately, we have to find the value of 63x. Now, what is given? क्या given है? Okay. मुझे बड़े वाले कोन का वॉल्यूम गिवन है क्या? बड़े वाले कोन का वॉल्यूम गिवन है? बिल्कुल गिवन है सर. आपके पास हाइट है, आपके पास डायमीटर है, तो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम भी गिवन है. दिस V ओरिजिनल
is 1/3 pi r square. R is 4, 16 and height is 12. ये आपको given है, right? From here you can calculate the value of x. हाँ या ना? Check this out. From here you can calculate the value of x. निकाल सकते हैं? निकाल लो, ठीक है? आ जाओ. So this goes in 4 times, ठीक है? And this goes in 3 times, और ये 3 से 3 चला गया. X is what? Pi. X क्या मिल गया? Pi. So x की वैल्यू है pi. I need some space. चलो, x is pi. Pi. And volume of B निकालना था 63x. तो volume of B would be 63 into pi. Pi is 22/7. Pi is 22/7. Yes or no? This goes in 9 times. 22 into 9 is 198. So volume of piece B is 198. Volume of piece B is 198. Sorted? Chalo, let's move to the next question. Oh, I'll give you 90 seconds again. Try this question. Come on, guys. You got 50 seconds. Just a second. थोड़ा विजुलाइज करने में इजी हो जाएगा अपने को, ठीक है? कम ऑन यार. चलो देखो, these are 3 faces of a rectangular brick. Okay, क्वेश्चन में क्या गिवन है गाइस? क्वेश्चन पे फोकस करो. Their diagonals of the faces are in the ratio. अभी देखो, we have 3 faces. Okay, we have 3 faces, 6 faces, right? अभी 6 faces में how many unique faces we have? This is one of the faces. इसके just back में you have identical to face 1, right? अभी इधर you have identical to face 2,
और बॉटम में यू हैव आइडेंटिकल टू फेस 3. व्हेन आई से दिस इज फेस 2 एंड दिस इज फेस 3. ओके, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन तीनों के फेस डायगोनल का रेशियो गिवन है आपको. फेस डायगोनल का रेशियो. इफ आई से द लेंथ, इफ आई से दिस टू बी लेंथ एंड दिस टू बी ब्रेड्थ एंड दिस टू बी हाइट, तो तीन जो फेस डायगोनल्स है वो कैसे कैलकुलेट होंगे? सर वो इस तरीके से कैलकुलेट होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यस और नो? ये टॉप फेस का हो गया, राइट. एक होगा स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट. ये फेस का जो डायगोनल है दैट इज स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. दिस फ्रंट फेस, फेस 1 का जो डायगोनल है, और इन तीनों का रेशियो गिवन है 3, 2√3 एंड 15. ओके, इन तीनों का रेशियो गिवन है 3, 2√3 and 15. Let's say this is 3x, this is 2√3x, and this is root 15x, right? तो आपको क्या करना था? आपको एल, बी और एच कैलकुलेट करना है एंड लॉन्गेस्ट अपॉन शॉर्टेस्ट का रेशियो बताना था. सो यू हैव टू कैलकुलेट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का रेशियो बताना था. चलो लेट्स सॉल्व फॉर एल, बी एंड एच. ओके, इसके लिए सॉल्व करते हैं. लेट्स डू दैट. चलो, इफ आई स्क्वेयर दीज, इनको स्क्वेयर कर दिया तो व्हाट आई गेट? आई गेट एल स्क्वायर. ध्यान देना बेटा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 9x स्क्वायर. 9x square. I'll get b square plus h square is 4 3s are 12x. So this would be 12x square. इसको स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 4 into 3 12x square, right? And then l square plus h square is l square plus h square is 15x square. अगर इन तीनों को ऐड किया तो यू विल गेट 2 times l square b square h square equals 12 9 21. 21 plus 15 is 36x square. So l square plus b square plus h square is 18x square. खत्म? नॉट खत्म, आई मीन ब्रैकेट से बाहर रखते हैं. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर is 36x square. अब देखो, I have the value of L square plus B square which is 9x square. So this is 9x square. तो h क्या हो जाएगा बेटा? No, this is 18x square, sorry, divided by 2 है ना. This is 18x square. And now if I say कि this is 9x square, so h would be 9x square. h square would be 9x square, in fact, not h square would be 9x square, right? Now similarly, b square plus h square is 12x square. This is 12x square. How much is l square? L square is 6x square, and by same logic b square would be 3x square. b square would be 3x square. अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सर सबसे छोटा है बी स्क्वायर और सबसे बड़ा है एच स्क्वायर. ओके, और मुझे शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट निकालना था. तो सबसे छोटा है बी. बी स्क्वायर इज 3x स्क्वायर. तो व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? रूट 3x है ना. बी स्क्वायर है 3x स्क्वायर, तो व्हाट वुड बी बी? बी वुड बी रूट 3x. h square is 9x square. So what is h? 3x, right?
इनका रेशियो पूछा था. They had asked the ratio of shortest upon longest. So this is 1 upon root 3. Yes or no? X से x गया, root 3 से 3 goes in root 3 times. So correct answer is 1 upon root 3. बोलो yes sir. अब देखो ये उनको ही समझ में आ रहा होगा जो लड़के कंसिस्टेंट है, जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट है. आप रैंडमली कभी आओगे और समझने की कोशिश करोगे तो इट वुड बी अ टफ टास्क. दीज क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू विजुअलाइज. एंड इस क्वेश्चन में यू हैव द फ्लेवर ऑफ लीनियर इक्वेशन. once you have made the equations, ये क्या है? These are nothing but linear equations in 3 variables. आपको सॉल्व करने आना चाहिए. So most of the things in mathematics are interrelated. Topic A का concept is used in topic B, topic B and A का concept can be used in topic X, topic Y, topic Z. Be consistent, that is very important. Okay. Yes, Anuj Kundu. Chalo. Guys, we'll stop here. There are a couple of more questions. I'll give you them for your practice. In next session, we'll be starting with permutation and combination. Okay. This question is for your practice. And one more question is for your practice. Attempt them. Put your answers in the comment box. And I'll discuss these questions in the master class. The master class is scheduled at 8:15 p.m. today only. So we will discuss these questions in the master class. Okay. Chalo. Not to forget, if you wish to connect with me for any of the reasons, you can join my official Telegram channel, which goes by the name Ashish_Textbook MBA. This channel pe I do put all the free classes, free resources, and the notes of the classes that you have just attended. Okay, chalo beta. Have a great day ahead. See you again in the next session in master class. Chalo.